Okay, so again, this is unit number 6, International Aspects, and chapter number 25, and its first topic is Terms of Trade. In short form, we can write it as TOT as well. And the second topic that we will be doing is Comparative and Absolute Advantage Theory, but now in this video, I'll explain you Terms of Trade. So starting with the definition of terms of trade, so the objectives include like definition of terms of trade, and then we will look into the calculation of terms of trade, like what is the formula to calculate terms of trade. And the next thing that we will do is, okay, what are the causes of changes in terms of trade? Causes of changes in terms of trade. So focus more on my voice instead of writing, because writing might not be clear. So focus on my voice as well. So the next thing is, okay, what will be the impact of changes in terms of trade, right? So definition, calculation of terms of trade, and causes of terms of trade, and impact of terms of trade. So this is the topic for today. So first of all, if we define terms of trade, so terms of trade is the ratio of price of exports and price of imports. Px is price of export and Pm is price of import, multiply by 100. So this is the formula to calculate terms of trade. So it is kind of like misguiding and misleading term. Generally what students think is that terms of trade mean like conditions of doing trade. So यहाँ पे terms of trade का meaning वो नहीं है कि आप like trade करने के क्या terms and conditions हैं. This is like different. Like naming conventions में कुछ naming conventions economics में इस तरह की हैं जो बिल्कुल misguide करती हैं, but actual meanings are totally different. So terms of trade is the ratio of price of exports divided by price of import multiplied by 100. So px over pm into 100. ज़हन में रखें कि sometimes examiner writes के price index of export divided by price index of import. Sometimes he writes average price of export divided by average price of import. So all of them have the same meanings. Okay, so now moving to the next thing, if the result of calculation of terms of trade is greater than 100, if TOT is greater than 100, it is called favorable or positive terms of trade, right? So it is favorable terms of trade. And if answer of the calculation of terms of trade is lesser than 100, then it is called like unfavorable terms of trade, unfavorable TOT. Okay, so now moving to the next thing, why like terms of trade changes. And before that, let's have a look on one like numerical question as well, and then at the end I will also show you one exam question so that you understand how to like calculate terms of trade. So I'm now assuming one question. So terms of trade, you have to find terms of trade, and for that, like there is, examiner has given you the information that there is rise in price of export by, let's say, 20%, and there is rise in price of import by 10%, right? So keep in mind that whenever there is rise in price of something, we add it into 100. Like just say, for example, if there is 20% rise in price of export, then price index of exports will be 120. Base price हम हमेशा 100 लेते हैं. Base price या basic price भी sometimes कहते हैं इसको. Basic price is always taken as 100. If there is rise in price, then we will add it into 100. So 20% rise in price of export will make price of export equal to 120. Like 100 में 20% add कर देंगे, 120 आ जाएगा. There is rise in price of import by 10%.
तो प्राइस ऑफ इम्पोर्ट अगर 10% बढ़ेगी देन इट विल बी नाउ 110. ठीक है. So just now you have to put these values into the formula. Price of export is now 120. Price of import is 110 multiplied by 110. So you can use the calculator now to figure out the answer. Okay, so 120 into 100 will give us 12,000. Right, so I multiplied 100 and 120, so divided by 110. So the 12,000 divided by 110 will give us 109. So 109 is greater than 100. So when answer is greater than 100, it means terms of trade is favorable. ठीक है. सो इस चीज़ का ज़हन में रखें. अगर ये आंसर हमारा 100 से नीचे आ जाता तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होता, और अगर ये 100 रहता तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका कांस्टेंट रहता, सेम रहता, ना उसमें इम्प्रूवमेंट आती ना ही उसमें डिक्रीज आता. Now moving to कि why terms of trade may change, right? So changes in terms of trade के क्या reasons हैं? देखिए, changes in terms of trade तभी आएगा whenever there is change in price of exports and imports. ठीक है. अगर let's say change की बात करें तो there can be like two types of changes. One is favorable change, जब आपका terms of trade favorable हो जाता है, 100 से बड़ा आ जाता है आंसर, favorable terms of trade. And the second thing is unfavorable terms of trade. तो कब कब ये favorably move करेगा, कब कब ये unfavorably move करेगा, so we can have a look on that. जी, favorable जैसे मैंने बताया मीनिंग होता है कि आपका जो terms of trade का आंसर है वो greater than 100 होना चाहिए. So आपके पास फॉर्मूला है terms of trade का कि TOT is equal to price of export डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इनटू 100. तो इस फॉर्मूला से मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर हमेशा 100 से बड़ा आएगा इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. लाइक प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवरऑल प्राइस ऑफ इम्पोर्ट से ज़्यादा होनी चाहिए. राइट. सो जब भी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल. नाउ मूविंग टू द अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड. और टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें अनफेवरेबल तब आएगा जब आपके पास न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होनी चाहिए प्राइस ऑफ इंपोर्ट से, तो आपके पास आंसर लेस देन 100 आएगा. लाइक प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी लेसर देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट. अब इसके लिए क्या क्या सिनेरियोज हैं जिनमें प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट डिफर करेंगे. पहले हम टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल की बात कर लेते हैं. सो फेवरेबल के लिए लाइक तब आपका फेवरेबल होगा, लेट्स से कि इफ़ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेज while price of import remains constant, right? There is no change in price of import, but price of export increases. Then as price of export remains constant, there is no change in price of export, but price of import falls. Like जब price of import fall करेगी, it will be lesser than 100, right? तो अब इस केस में भी आपके पास price of export constant है तो it will remain 100, और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट अगर कम हुई है तो ये 100 से छोटा हो जाएगा आंसर. तीसरा सिनेरियो है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेज फास्टर देन राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट. लाइक अब अगर इफ बोथ आर इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेज एट फास्टर रेट. जैसे ऊपर मैंने लिखा था कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट वाज इंक्रीजिंग बाय 20%, प्राइस ऑफ इंपोर्ट वाज आल्सो इंक्रीजिंग बट बाय 10%. तो आंसर हमारे पास 109 आया था जो कि फेवरेबल था. एंड अनदर सिनेरियो इज कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ इंपोर्ट फॉल्स, तो इससे भी टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका फेवरेबल हो जाएगा. और लास्ट सिनेरियो है इसका कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीजेस बट slower than the fall in price of import, ठीक है. दोनों फॉल करें लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा रेट के साथ फॉल करें एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट प्राइसेस, ठीक है. सो एक्सपोर्ट प्राइसेस कम रेट से फॉल करें, इंपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा रेट से फॉल करें.
ओके, सो नाउ मूविंग टू अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड. इसमें भी लाइक उसी तरह से इसी को हम ट्रांसलेट करते जाएंगे कि पहले प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही थी, अब हम कहते हैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट फॉल्स वाइल प्राइस ऑफ इंपोर्ट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट सेम रहे. सेकेंड सिनेरियो इज कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज कांस्टेंट लेकिन प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो है इट इंक्रीजेस. ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दीज वैल्यूज. Okay, so the third situation is कि price of export increases but slower than the rise in price of import. Like both increase but price of import increases faster than the price of export. तब भी आपका terms of trade unfavorable हो जाएगा. Fourth scenario is कि price of export falls and at the same time price of import increases. तब भी आप unfavorably move करेंगे. Fifth scenario is कि price of export falls faster than the fall in price of import. ठीक है, so now both are decreasing but price of export is decreasing at faster rate. I believe कि you got this idea कि terms of trade क्या होता है, terms of trade favorable कब होगा, unfavorable कब होगा. नाउ द लास्ट थिंग इज कि इम्पैक्ट क्या होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड का, इम्पैक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आपका फेवरेबल हो जाता है, लाइक फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. उसका इम्पैक्ट शॉर्ट रन में तो आपको बेनिफिट देता है, लॉन्ग रन में नुकसान देता है. सो इट विल बी बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन व्हेन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल. इट इज़ बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन बिकॉज of inelastic demand for exports and imports. Inelastic demand, और inelastic demand का मतलब होता है कि change in price will lead to a smaller change in quantity demand. So terms of trade जब favorable है मतलब आपकी export prices ज़्यादा हैं और import prices कम है, और short run में आपकी demand inelastic होने की वजह से export prices ज़्यादा होने के बावजूद भी exports की demand में थोड़ी सी कमी आएगी, minor कमी आएगी. There will be a little change in fall in quantity demand for exports. So total revenue from exports will increase. On the other hand, price of import falls and there will be a little rise in price of demand for imports. So total expenditure on imports will fall. So export earning ज़्यादा होगी, import payment fall कर गई, तो आपका जो balance of payment होता है short run में वो like favorable position में चला जाएगा. जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल पोजीशन में चला जाता है, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, मे बी गवर्नमेंट को टैक्सेस भी ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं. लेकिन लॉन्ग रन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है. लॉन्ग रन में आपके पास डिमांड इलास्टिक हो जाती है. इलास्टिसिटी के बेसिक फैक्टर्स में है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड अगर शॉर्ट रन हो तो डिमांड इन इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन हो तो इलास्टिक हो जाती है. और इलास्टिक का मतलब है कि अ लिटिल चेंज इन प्राइस will lead to a greater change in demand. So अब आपकी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ेगी तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. मैं डबल एरो लगा रहा हूँ ज़्यादा चेंज के लिए. टोटल रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट से टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि आपकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, लोग आपसे ख़रीद ही नहीं रहे, आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा. प्राइस ऑफ इम्पोर्ट कम होगी और डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इलास्टिक डिमांड होती है लॉन्ग रन में, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है इंपोर्ट्स के ऊपर वो इंक्रीज़ कर जाएगा. सो लॉन्ग रन में आपका रेवेन्यू कम हो गया एक्सपोर्ट से और इनकम ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा दैट विल मूव टू डेफिसिट और अनफेवरेबल स्टेट. डेफिसिट या फिर अनफेवरेबल या नेगेटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं. ओके, सो नाउ आई एम शोइंग यू वन एग्जाम क्वेश्चन. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्राई करें आप लोग. यू कैन स्टॉप द वीडियो and try to solve this question and then play the video again to look at the solution that I'm providing. So terms of trade का again मैं basic formula लिख देता हूँ. Price of export divided by price of import multiplied by 100. So examiner says since 2000 is basically year 2000, right? A country's export price has increased on average by 50%. जैसे मैंने बताया था बेसिक प्राइस इंडेक्स 100 होता है, अगर 50% राइज है तो कितना होगा, 150 हो जाएगा. सो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट की जगह मैं 150 पुट कर देता हूँ यहाँ पे.
एंड देर इज राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट बाय 25%, तो ये इंडेक्स इसका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा. और बेसिकली फार्मूला का पार्ट है मल्टीप्लाई बाय 100 हमें ऐसे करना होता है. सो 150 into 100 करेंगे तो दैट विल बी जस्ट 15,000 divided by 125. So we will further calculate it and the answer will be 120. So terms of trade is 120. Answer C is option C is correct answer. और एग्जामिनर अगर पूछे ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है तो यू विल हैव टू से दैट इट इज़ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 100. Okay, so I believe you understand the concept, and this is it for this video. In next video I'll explain you like comparative and absolute advantage theory of international trade. So see you soon. Allah Hafiz.